Shri Adhir Ranjan Chowdhury. Sir, sir, I rise to subscribe the view enshrined in the Wildlife Protection Bill 2022, Wildlife Protection Amendment Bill 2021. Sir, verily the legislative documents has defined 6 clear objectives in order to comply the international agreement so as that our domestic legislation could be complied with that commitment. Sir, in order to ensure international trade in wildlife is legal, sustainable and traceable by implementing the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES. Second objective is protection of native Indian gene pool, improved management of protected areas, improved care for seized and surrendered wild animals, ensuring deterrence by enhancing fines, rationalization of schedules to the maximum act. Sir, yes, India is a treasure trove of wildlife species, both in plants, animals, etc. Sir, India consists 2.4% of world area, but 8.8% of all the recorded species we are having in our country, including 91,000 animal species, 45,000 plant species, 4 biodiversity hotspots, in addition to hundreds of natural parks and wildlife sanctuaries. Sir, even our Constitution has recognized the sanctity of the animal life, and it has suggested that all sorts of dignity should be provided to the wildlife protection of our country. Sir, in spite of all, I would like to put a few suggestions and also a little criticism insofar as the legislation is concerned. As the environmentalists have raised some apprehension and concern on this legislation. First of all, the bill should have been opened for more time in order to garner the public views and criticism, which meant that this suggestion could have enriched the legislative document further. But this legislation has not given the ample opportunity to the common people of our country and especially the civil society. This kind of concern has been raised by the civil society itself. So there is another apprehension that has been depicted by those environmentalists that the environmentalist community is perplexed as to why this reorganization is taking place and on what basis the specific amendment has been introduced. Reorganization means lack of clarity over schedule reorganization. The government must clarify the criteria and protocols adopted. The government needs to adopt a transparent and scientific criteria, such as the IUCN Red List, which adopts criteria such as species distribution, population size, trends in population, habitat status, and threats. Public consultations are also required to ensure scientific and transparent omission and inclusion to the new schedule. I do not know how much R&D government has been expending on the wildlife protection of our country. However, it's a very potential area that needs to be exploited by our talented population. I do not know how many meetings are being held by the National Board for Wildlife, where our Prime Minister is happened to be the chairman. Sir, again, insofar as animals is declared as vermin in this bill, to that point, it has been suggested that the bill may endanger 41 species of mammals, 864 birds, 17 reptiles and amphibians, and 58 insects. This in turn may lead to ecological imbalance
and impact local food chains. Experts have also recommended the need for a well-established scientific process for listing and delisting species, as well as the need to specify permitted management measure rather than just direct lethal control. Sir, again, on the issue of alien species can not only threaten biological diversity of the ecosystem, but also have a large impact on human health, food security, and economic growth also. Sir, again, on Section 29 for use of water in sanctuary, here I would like to highlight that the bill proposes that bona fide use of drinking and household water by local communities until they are settled shall not be deemed to be an act prohibited under this section. However, the definition of such bona fide use must be clearly laid down, ideally by the management plan to the respective sanctuary. Sir, so far as Sundarban is concerned, our honorable colleague Sogat Raiji also highlighting the issue of Sundarban. Before that, I would like to draw the attention of honorable minister. देखिए, हमारे देश में सिर्फ नहीं सारे दुनिया में पहले तो ड्रग के बाद आर्म्स के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके बाद इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग सबसे बड़ा क्रिमिनल इंडस्ट्री है। और इसमें ज्यादातर मैरीटाइम रूट से, मतलब समुद्री की रास्ते से ये इलीगल ट्रेड होते हैं। आपके पास क्या जरिया है ये इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए, ये थोड़ा हमें बताइए। क्योंकि सारे हिंदुस्तान में जितने बड़े देश है हमारा, ये जो लेजिस्लेशन लाते हैं आप, मुझे शंका है कि ये हमारे लिए काफी होगा या नहीं, गिवन द मैग्नीट्यूड एंड वाइडर डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। सर, जब तक सुंदरबन की सवाल है, सुंदरबन में ये मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए सुंदरबन सारे दुनिया में जाना जाता है। सिर्फ सुंदरबन से बंगाल में नहीं और हिंदुस्तान में नहीं, सुंदरबन की 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में है। और ये सारे मैंग्रोव इकोसिस्टम दो किस्म के इसके ऊपर हानि होते हैं। एक तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होते हैं, दूसरी तरफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन होते हैं। तो आपके वहां जो दो किस्म के कानून हैं, मान लीजिए प्रोटेक्टेड एरिया, उसको देखभाल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो इनहेबिटेंट जहां आम लोग की आबादी है वो देखने के लिए सुबह की सरकार की वहां दायित्व है। तो इसमें क्या कोई टकराव होते हैं, आप लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होते हैं। और दूसरी बात है कि आप ये वर्ल्ड हेरिटेज सुंदरबन को ये इन डेंजर बताया जाता है, खतरा पैदा होते बताए जाते हैं। तो इसमें IUCN आपको क्या निर्देश दिए हैं, क्योंकि सुंदरबन 2/3 बांग्लादेश में और हुआ रामफल में एक कोल फायर्ड प्लांट भी बन रहे हैं। तो इस विषय को लेकर क्या बांग्लादेश सरकार से आप लोगों को कोई बातचीत होता है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आ रही है, उनके साथ की बातचीत होने की कोई संभावना है? सर, इसलिए बंगाल में एक तरफ मैनीटर, आप जानते हैं बंगाल में सुंदरबन में बाघ जब मैनीटर के चलते हुआ सर सुंदरबन विडोज कॉलोनी बन चुके हैं। हजारों की तादाद में विडोज वो अपने जिंदगी को और सारे समस्या को झेलते हैं, सरकार किसी को देखभाल नहीं करते। और इसके साथ साथ हमारे बंगाल के हिल्सा, वो आप खतरे की हालात में गुजर रहे हैं। हिल्सा फिश, एम्फीबियन रेप्टाइल, वो तो अलग बात है। हिल्सा जो हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट मछली है, उनका भी पैदा होते जा रहे हैं। तो इसलिए सर सुंदरबन की रखरखाव करने के लिए आपको ठोस कदम उठाना चाहिए, ये बात